Now we are going to discuss some parts of the Indian Constitution, mentioned subject and Indian Constitution. So part 1, that was Union and Territory, Article 1 to 4. Part 2, citizenship. Part 3, fundamental right, 12 to 35. Part 4, DPSP, 36 to 51. Part 4A, fundamental duty, 51A. Part 5, 52 to 151, that is Union. And part 6, that was about the state, article 152 to 237. Part 7, 7 amendment of the constitution. So part 7 में क्या है? 7th amendment 1956. Part 8, union territory, UTs के बारे में है part 8. And there's a 239 to 242 article. Part 9, पंचायत 243 to 243O. पार्ट 9 है म्यूनसिपैलिटी 243P to 243ZG. पार्ट 9A 9B, that was cooperative 243ZH and ZT. Part 10, schedule areas 244 to 244A. Part 11, 245 to 263, that was the relation union and the state. Part 12, finance related 264 to 300A. Part 13, trade and commerce 301 to 307, that was the part 13. And part 12 for the finance, part 11 for the union state relationship, 12 for the finance, 13 for the trade. Part 14, 308 to 323, that was services. Part 14A, that was 323A to 323B, tribunal. Part 15, election 324 and 329A, that is for the election. Part 16, that was 330 to 342, special provision of the classes. So 330 to 342. Part 17, languages 343 to 351. Part 18, emergency 352 360. Part 19 was miscellaneous, and part 20 is for the amendment. Part 21 is the special provisions like 369 and 392. And part 22, that was the titles 393 to 395. Now Article 1, name and territory. Article 2, admission, establishment, new state. 3, formation of new state and alteration of the areas, boundaries and state. 5th is for the citizenship. 6, right of the citizen, certain person who has migrated to Pakistan. 10 is continuation of right of citizenship. 11 is parliament to regulate the right of citizenship by the law. So laws, parliamentary law is important. Part 10 is continuation of the right of citizenship. Right of citizenship. Part Article 12, definition of the state. 13, law inconsistent with the fundamental right if there is a derogation. Now what is the fundamental right? 44th amendment constitution of the 7 basic rights are given here. And article 300 is a legal right now, and this is made included the part 12. So article 300 is now in part 12, and this is now as a legal act, legal law as per the 44 amendment of 1973, and before it was in article 31 and it is removed from here. Okay, and before there was a 7 rights, now it is 6 right only. So equality before law, prohibition, discrimination, religion, race, caste, sex, place, birth. 16 is equal opportunity, abolition of untouchability. 18, abolition of title. Article 19 is important. See, A is for the freedom of speech, B is for the assemble together, C is for the association, D is for the move freely, E is for the residing, and F is for omitted, it is not there now. G is for the practice the profession. Okay, and 20 is protection respect to the conviction of the offenses, and 21 is protection of the life,
22 protection against the arrest and detention. Right against exploitation. 23 is the trafficking against and forced labor, and 25 is the prohibition of employment of children of 14 year of age of factories. Right of the freedom of the religion. 25 is conscience, practice, profession. 26 freedom of the manage the religious affairs. 27 freedom pay the taxes. 28 freedom of attending the religious instruction. Article 29 and 30 is the cultural right, protection of the minorities and right of minority to establish the education institution. Article 32 remedies enforcement of fundamental right, that is for the remedies for enforcement of fundamental right. 36 is the definition, this is DPSP. 37 DPSP in like. 39 a equal justice, free legal aid. 40 is the village panchayat. 41 right to work, education. 43 the wages of the worker. 43 a participation of the worker. 44 uniform civil code, it's applicable in the Goa only. 45 provision free compulsory education. 46 protection of the educational economical interest of SC, ST and OBC. 47 duty of the state to raise the level of the nutrition standard of living. 48 organization of the agriculture and animal husbandry. 49 monuments को preserve करना. 50 separation of judiciary from the executive. 51 international peace and security. Now next one is fundamental duty, that was 51 and A. It is 11 fundamental duties, 42 amendment 1976, 10 fundamental duties and 86 amendment of 2002 included the 11th. So there is a this is the fundamental duties we will do in the next session. First we are going to discuss the union. So there shall be a president. 52 executive power of the union based in the president. Election in the 54. Procedure impeachment, that was 61. Vice president 63, and the vice president to be the ex officio chairman of the council of the state 64. Election of the vice president 66. Pardoning power of the president 72. 74 is the council of minister aid and advice attorney general 76. 79 constitution of the panchayat parliament. 80 is composition of Rajya Sabha and 81 is composition of the Lok Sabha. 83 duration of the house. 83 is duration of the house of parliament. 93 is the speaker and deputy speaker. So deputy speaker and speaker. 105 power and privileges. Power and privileges of the parliament. 109 special procedure of the money bill, and 1110 is a definition of money bill. So definition 110 में है और special provision in the 109. Annual financial statement 112. Appropriation bill 114. 123 is the power of president to promulgate ordinance. 124 of the Supreme Court. 125 salary of the judges. 126 अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग जजेस. सो एक्टिंग जो एक्टिंग करते हैं वो 126 में आते हैं. ठीक है, लाइक हम स्कूल में थे तो मेरा पहला जो फॉर्म था 2610 से ही स्टार्ट हो रहा था. सो काइंड ऑफ जो एक्टिंग स्कूल वाले लोग करते हैं ना, तो ये एक्टिंग वाले लोग 126 में. ओके, नाउ 127 इज़ एडॉक जजेस. सो एडॉक इज़ 127. 128 इज़ attendance retirement of the judges. Okay, so retirement attendance of the retired judges at the Supreme Court. 129 Supreme Court to be act of the record. 129 is the act of the record. 128 attendance retired judges as a sitting of the Supreme Court. 126 is the acting. Last one, it's acting because 1A26 is judge. A to Z अंग्रेजी हमेशा एक्टिंग ही करती आई है. सो दैट्स वाई वी कैन से 126 इज़ फॉर द एक्टिंग. 127 इज़ द एडॉक जजेस. दिस इज़ फॉर द एडॉक जजेस. 128 अटेंडेंस ऑफ द रिटायर्ड जजेस. 129 सुप्रीम कोर्ट टू बी ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड. इट इज़ रिकॉर्ड है. 130 सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. सीट इज़ गिवन द 130. एंड 136 स्पेशल लीव फॉर एन अपील टू सुप्रीम कोर्ट. सो स्पेशल लीव
that was in 136. 137 review of the judgment. So 137 is for the review of the judgment of the Supreme Court. 141 decision of Supreme Court is binding all court. So 141 में है कि it is binding to all courts. 148 comptroller auditor. 149 में duties of the king. ओके नाउ अब कुछ स्टेट के आर्टिकल देखेंगे हम. 153 गवर्नर, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द गवर्नर. नाउ 161 पार्डनिंग पावर. 165 एडवोकेट जनरल. 213 द पावर ऑफ प्रोमulgate ऑर्डिनेंस. 214 हाई कोर्ट. 215 हाई कोर्ट टू बी ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड. 226 लाइक 215 में है हाई कोर्ट क्या है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड. 216 में 226 में है पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इशू सर्टेन रिट. एंड 233 में अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस. 235 में कंट्रोल ओवर द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स. पार्ट 9 को रिपील किया गया. दिस इज रिपील्ड आर्टिकल 238. यूनियन टेरिटरीज दैट वाज 239 to 242, that was the part 8. It was about the union territories. पार्ट 9 पंचायत ग्राम सभा ए. बी में है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पंचायत. ओके नाउ पार्ट 9 में म्यूनसिपैलिटी 243 P2, 243 ZG. पार्ट 10 है शेड्यूल ट्राइब्स एरियाज. पार्ट 11 सेंटर स्टेट रिलेशनशिप 245 to 263, that is the part 11 and that is the center state relationship. और पार्ट 10 जो है शेड्यूल एरिया है. शेड्यूल एरिया कहाँ पर है, पार्ट 10 है. पार्ट 9 में तो है म्यूनसिपैलिटीज सारी. पार्ट 10 में है शेड्यूल ट्राइब्स इन 244. पार्ट 11 में सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, that was 245 to 263. It is the part 11 सेंटर स्टेट रिलेशनशिप. एंड पार्ट 12 में है फाइनेंस वगैरह. तो आर्टिकल 266 कंसोलिडेटेड फंड एंड द पब्लिक अकाउंट. 267 कॉन्टीजेंसी फंड. 280 फाइनेंस कमीशन एंड 300 राइट टू प्रॉपर्टी. ओके सो पार्ट 12 जो है दैट इज़ द फाइनेंशियल प्रॉपर्टीज. ओके 300 A फॉर द राइट टू प्रॉपर्टी. फाइनेंस कमीशन 300 A फॉर द राइट टू प्रॉपर्टी. नाउ पार्ट 13 ट्रेड कॉमर्स इंटरकोर्स ऑफ द टेरिटरीज ऑफ द लाइक 301 फ्री ट्रेड होना चाहिए. 302 इज द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू इम्पोज रेस्ट्रिक्शन ऑन द, इट इज़ द रेस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रेड एंड दैट वाज द 302. सर्विसेज एंड सेंटर इन द स्टेट 308 to 323. ऑल इंडिया सर्विस, पब्लिक सर्विस कमीशन एंड फंक्शंस 320. Part 14A that was given 300 A and B administrative tribunal. And part 15 very important, it is for the election like 324 to 329. Okay, 324 superintendent direction election commission in the election. 325 no person to be ineligible for the inclusion claims to be included in the special electoral roll. Ground of religion, sex, caste. And article 26 is 326 is election to be house of the people and to the legislative assembly of the state basis of the adult suffrage. Okay, article 16 part special provision for the SC, ST and minority 320 to 340. 338 for national commission for SC, ST. 340 appointments commission to investigate the conditions of the backward classes. So this is for the SC, ST and this is for the backward classes. And 16 जो था part that was for the special provision of SC, ST and backward, and that was the part 16. And special provision for the SC, ST and the backward classes 340, and that was the part 16. Part 17 is the official language. 343 is the official language union. 45 is official language of the state. 348 languages to be used in the Supreme Court and the High Court. Supreme Court and the High Court. Okay, and part 16 में तो SC, ST से provision जितने भी आएंगे 16 में आएंगे. 16 मतलब P बोलते हैं इंग्लिश में. So this is like ST, SC and OBC के सारे provisions. Okay,
एंड 343 एंड 351 पार्ट 17 क्यू क्वीन हो गया. क्वीन लैंग्वेज ही होती है. So this is the official languages and then languages of the state. And 348 means languages used to be the Supreme Court and High Court. 351 is the DPSP, directive for the development of the Hindi languages. Emergency provisions 352 to 360. Okay. So part 18 को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आर मतलब रेट, चूहा. ओके. सो दिस इमरजेंसी जब भी लगती है तो सबसे पहले ज़मीन खोदने कौन पहुँचते हैं? चूहे ही पहुँचते हैं ना. तो यहाँ 352 इज़ द प्रोक्लेमेशन ऑफ द इमरजेंसी, 356 स्टेट इमरजेंसी, 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी विल बी देयर. सो दिस इज पार्ट 18 दैट इज रिलेटेड टू द इमरजेंसी. पार्ट 19 दैट वाज अ मिसलेनियस. ओके. इट इज़ एस 361 to 367. So protection of the president and governor is given in the पार्ट 19. सूर्य जो होता है वही तो प्रोटेक्शन करेगा किसकी? प्रेसिडेंट की और गवर्नर की. तो पार्ट 19 इंग्लिश में एस बोल सकते हैं. ठीक है. तो सन ही तो करेंगे ना प्रोटेक्शन. तो प्रोटेक्शन कहाँ दिया गया? 361. किसी भी कोर्ट में इनको नहीं भेजा जाता है. पार्ट 20 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 368. So powers of the parliament to amend the constitution, that was the part 20. RST, टी का मतलब क्या होता है? टैप. टैप मतलब नल, नल में से पानी आना. ठीक है. पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन. अब जब भी अमेंडमेंट करना हो, वाटर आ रहा है, नया वाटर आ रहा है अगर समुद्र के अंदर, तो अमेंडमेंट करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे ना. दैट्स वाई पार्ट 20 इज रिलेटेड टू द अमेंडमेंट्स. ओके. नाउ पार्ट 21 स्पेशल ट्रांजिशनल एंड टेम्पररी प्रोविजन फॉर द 369 and 392. So part 370 temporary provision for the Jammu and Kashmir, and part 371 special provision for the Nagaland, and J is for the special provision for the Hyderabad. So J is for Hyderabad and A is for the Nagaland, and this is part 21. U बोल सकते हैं अम्ब्रेला. ठीक है. तो अम्ब्रेला जब भी आएगा तो हम लोग क्या करेंगे? जितने भी नए नए अच्छे अच्छे एरिया है जैसे कि जम्मू हो गया, नागालैंड हो गया, हैदराबाद, उनको प्रोटेक्शन देने लगेंगे. ठीक है. पार्ट 22 मतलब वी मतलब वैन. गाड़ी चला रहे हैं. अब हम गाड़ी जब भी चलाएंगे ना तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म हो जाएगा. लाइक हमने कार कंप्लीट कर दी पूरी, तो इसमें आर्टिकल 392 टू 395 आ जाएगा. शॉर्ट टाइटल कॉन्स्टिट्यूशन में बी कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. सो आपकी गाड़ी ख़त्म होते ही कॉन्स्टिट्यूशन भी ख़त्म. आर्टिकल 395. सो दिस इज़ हाउ आई टोल्ड यू. नाउ नेक्स्ट इज फर्स्ट शेड्यूल दैट वाज 1 to 4. सेकेंड शेड्यूल 59, 65 लाइक दीज आर्टिकल्स. थर्ड शेड्यूल आ गया जिसमें 75, 84 मतलब ओथ एंड अफर्मेशन आता है. यहाँ पे मॉल्यूमेंट्स एंड सैलरीज आ जाएंगी किनकी? जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं. फोर्थ शेड्यूल में आर्टिकल 4 और 80 आ जाएगा. ठीक है. फिफ्थ शेड्यूल में आर्टिकल 244 आता है, स्पेशल प्रोविज़न. सिक्स शेड्यूल में 244 एंड 275 ग्रांट्स भी देते हैं. किसमें? सिक्स शेड्यूल में. सेवन शेड्यूल में आर्टिकल 246 आएगा. एट्थ शेड्यूल में आएगा 344 एंड 351 मतलब लैंग्वेजेस में 344 एंड 351 तक. ठीक है. नाइन्थ शेड्यूल लैंड से रिलेटेड है 31B. 31B इज रिलेटेड टू नाइन्थ शेड्यूल. टेंथ शेड्यूल में आर्टिकल 102, 191 एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड आर्टिकल्स आएंगे. 11th शेड्यूल में 243G वर्क एंड 12th में 343W आएगा. ठीक है. नाउ नेक्स्ट वन आर्टिकल 12 to 35 दैट इज फंडामेंटल राइट. 36 to 50 डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी. 51 फंडामेंटल ड्यूटीज. 80 नंबर ऑफ द सीट्स इन द राज्यसभा and 243 panchayat and 343 Hindi and English language. 356 imposition of present rule. 370 special status to Jammu Kashmir. 395 repealing Indian independence government of India 1919. Now article related to the emergency. This is the proclamation of the emergency 352 and that was which part I told you? Part rates वाला है ना. RST 18. So 356 provision in the case of failure of constitutional machinery. 360 financial emergency. 356 provision in case of failure of constitutional machinery. Okay. Now next one is article 112 annual financial statement. 202 annual financial statement of the state. 113 procedure in the parliament with respect to the estimates
and 203 procedure legislation with respect to the estimates in the state. 203 in the state. 114 appropriation bill. 204 here is the appropriation bill of the state. And 115 supplementary additional access grant. 205 is same supplementary additional access grants. 100 आप प्लस कर ले मतलब 95 को प्लस करना था और आपको वो आर्टिकल मिलेगा. 116 इज वोट्स एंड अकाउंट्स एंड एक्सेप्ट द एक्सेप्शनल ग्रांट्स एंड 106 में यहाँ पे आ जाएगा वोट ऑन अकाउंट, वोट ऑन क्रेडिट. ओके, यहाँ 116 में वोट ऑन अकाउंट है, वहाँ 206 में है. 117 स्पेशल प्रोविजन फाइनेंशियल बिल. 207 स्पेशल प्रोविजन फॉर द फाइनेंशियल बिल इन द स्टेट. नेक्स्ट आर्टिकल 118 rules of the procedure and article 208 that was rules of the procedure of the state. Article 119 regulation of the law procedure parliament relation to the financial business. 209 regulation by the law procedure in the state for the financial. state में financial matter और यहाँ पर है center में. 120 languages है. 210 is also languages. So 120. अब ये देखो 2 को उधर आगे ले जाएंगे, 210 आ जाएगा. दैट इज ऑल्सो लैंग्वेजेस इन द स्टेट लेजिस्लेचर. 121 restriction discussion in the parliament and 211 also the restriction discussion in the parliament. 122 courts not to inquire the proceedings. So 121 and 122 is for the center, court inquire नहीं करेगी, and 211 and 212 in the state court inquire नहीं करेगी. ठीक है. 123 ऑर्डिनेंस करना. 213 स्टेट में ऑर्डिनेंस प्रोमुलगेट करना. कौन करता है? गवर्नर. हेयर इज द प्रेसिडेंट. 124 एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. 214 फॉर द हाई कोर्ट. नेक्स्ट है आर्टिकल 72 पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रैंड पार्डन, सस्पेंस, कम्यूट करना. 161 में पावर ऑफ गवर्नर टू द सस्पेंड, रिमिट, कम्यूट सेंटेंस को करना. ठीक है, यहाँ पे कोर्ट मार्शल एंड डेथ विल नॉट बी इन्वॉल्व. 74 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एड एंड एडवाइस टू प्रेसिडेंट. 160 council of minister aid and advice to governor. 75 of other provision as a minister. 160 for other provision of the minister. 76 attorney. 165 advocate general. 77 is conduct of the government of India. 166 is the conduct of the state. 78 is duty of PM to respect the furnishing information. 167 is duty of the CM to furnish the information. 79 is the constitution of parliament. 168 is the constitution of the state legislature. So 79 for the parliament and 168 is for the state legislature. 85 में session of the parliament for the dissolution. 174 session of the state legislation for the dissolution. 86 rights of the preside to the address send message to the house. 175 right of the governor. यहाँ प्रेसिडेंट एड्रेस सेंड कर रहा है, जबकि यहाँ पे कौन कर रहे हैं? गवर्नर इज सेंडिंग एड्रेसिंग टू द मैसेजेस. 88 में अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड मैटर्स. 177 में है एडवोकेट. ये देखो 88 है, 88 यहाँ पे 77 है. दैट इज द राइट्स ऑफ एडवोकेट जनरल. 102 डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर. 192 डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द स्टेट के मेंबर. 105 इज पावर प्रिविलेजेस ऑफ द हाउस, parliament and the member of the committee. 194 power privileges of the house for the state. Article 100 that was voting of the house of power of the house for the vacancy of the quorum में. And 189 voting of the house of power of the act not for vacancy of the quorum. तो 100 में quorum and 189 में भी quorum है. 100 and 189 these two article are for the quorum. This is for the parliament, this is for the state. बिल्स के लिए 111 है. यहाँ पे बिल्स के लिए है 200 आर्टिकल फॉर द गवर्नर. मनी बिल 110 में डेफिनेशन है और 199 में यहाँ पे क्या है? डेफिनेशन ऑफ द मनी बिल. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट ऑल आर्टिकल्स वी डिस्कस टुडे.